So open your rough copies. We are going to write the shortcut keys from all the chapters. Be quick, everyone. So let's start. The shortcut key. Write the shortcut keys for the following. To save database, shortcut key. To save database, to close, access application, to close, access application, to move one cell right in a table, to move one cell left in a table, to quit access, to quit access, next is to merge selections in Photoshop, to merge selections in Photoshop, to subtract from selection, to finish cropping process, undo, to undo more than one action, firstly do this, be quick, complete these. Hurry up. Site please, ma'am. डन बच्चे, डन।
करें स्टार्ट? हो गया सबका? डन वेदांती? हाँ जी, टू सेव डेटाबेस किसके एंड पे इतनी डिस्टर्बेंस है? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। हाँ जी, टू सेव डेटाबेस Ctrl+S। अंशिका, आप अपने आप को अनम्यूट ही रखो, अदरवाइज बार बार मुझे करना पड़ेगा फिर। प्रभजोत अनम्यूट। मान्या, जयंत, What is the shortcut key to close a SAS application? हाँ जी, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेविंग द डेटाबेस? Ctrl+S. Ctrl+S. What is the shortcut key? Ctrl+S. Second, to close a SAS application, Alt plus, that is Alt plus F4. To save database, Ctrl+S, Alt plus F4. To move one cell right, Tab key. To move one cell left, Shift plus Tab key. To quit SS, हाँ जी, who will answer? मान्या, अंशिका, no one? F1. कैसे क्विट करोगे? क्विट मतलब क्लोज करना। File How do we menu, close? exit option. We are not learning the options here. We are doing the shortcut key. Alt plus F4. सेम ही तो चीज लिखी है मैंने। टू क्लोज असेस, टू क्लोज, क्लोज की जगह मैंने क्विट कर दिया है। वहां पे एप्लीकेशन लिखा है। एप्लीकेशन मतलब पूरा का पूरा असेस बंद करना। यहाँ पे मैंने बोला क्विट असेस। क्विट असेस मतलब अगेन बंद करना। बस थोड़ा सा नेम चेंज किया और आपको पता ही नहीं चला कि आंसर क्या आना है। क्रैमिंग नहीं करो चीजों को, समझो। To merge the selection, shift key. Shift key. To subtract from selection, Alt key. to finish cropping process, Enter. enter key. Undo, Ctrl+Z. to undo more than one action. Shift plus Ctrl+Z. हाँ जी, Shift plus Ctrl+Z. अंशिका you are saying shift plus control plus Z. मनीषा आप कह रहे हो control plus alt plus Z. So any other answer apart from these two? Control plus Alt plus Z. So the answer is control plus. Yes, Jayant, your answer is correct. Control plus
Control plus Alt plus Z. Clear? So be quick. Once again, revise all these 10 shortcut keys. Jaldi se everyone. Revise it once again. எக்ஸசைஸ் பண்றதுனால உங்க பாடியை ஃபிட்டா உங்களோட அப்பியரன்ஸை இளமையாவும் வச்சுக்க முடியும். பட் உங்க பிரெயினை எப்படி இளமையா வச்சுக்கிறது? அதுக்கும் Okay, the next one is cut, சரி, copy, paste, to deselect the selection, to copy selected part of image within the same image, move tool, crop tool, gradient, paint bucket, magic wand, quick selection, lasso tool, marquee tool, complete it. Hurry up. Cut, copy, paste. To deselect the selection, to copy selected part of the image within the same image, move, crop, gradient, paint bucket, magic wand, quick selection, lasso, marquee. Current start. Done. Yes, everyone. Anji, what is the shortcut key of cut? Control plus plus X. C किसने बोला है? It's control plus X. Copy. Control plus C. Control plus C. Paste. Control plus V. V. To deselect the selection. Control plus D. To copy selected part of the image. Alt key. Alt. Move tool. V. Crop tool. C. 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 Gradient. G. G. Paint bucket. B. B.
Paint bucket tool. G. G. Magic wand. W. W. Quick selection. W. Lasso. L. Marque. M. पिछली वाली 10 रिवाइज हो गई है सबकी. Now revise these next one. Be quick. By the time I am writing the next one, you are revising the previous one. So till 23 shortcut keys should be on the tips to everyone. Right now you have to learn it. Be quick. Once you have revised, then start writing. पहले revise करोगे. Next. Start doing the next one now. Zoom in, zoom out. And just start doing it. Brush tool, type tool, switch between horizontal and vertical type tool, hue or saturation dialog box, increase brush size, decrease brush size, blur tool, to define source point, to see the size of brush, zoom in, zoom out, to move an image while zoomed in. So total 35 shortcut keys of all the chapters. Be quick, complete it. That is the command. टेबल भी कंट्रोल एस से हो जाएगा. 36th लिख लो. Write down the 36th.
To save the table and close. To save the table and close. What's the answer? Control plus W. Control plus W. Control plus W. Okay, so let's start. Brush tool B. Type tool T. T. To switch between horizontal and vertical type tool, Shift plus Shift T. plus T. Shift plus T. Hue and saturation dialog box, Control plus U. To increase brush size, Right square bracket. right square bracket. To decrease brush size, Left Square bracket. left square bracket. I hope all the online students have noted it down in the notebook. आपने पूरा एक टेबल बनाया हो, because all the offline students has done that. So if you have not done it, do it right now. Make the complete table of shortcut keys in the rough notebook. Blur R. Define source point. Alt key. To see the size of brush, Caps lock. caps lock. Zoom in. Control plus. Control plus. Zoom out. Control minus. Control minus. To move an image while zoomed in. Hand tool. No, we are not asking the tool here. The shortcut key. What is the shortcut Space key? bar. Space bar key. Space bar key. Clear है? All the shortcut keys. Give it a revision. Be quick. Hurry up. Should I raise? No. ये जो इससे हमारा साइज इंक्रीज होता है, इससे हमारा साइज डिक्रीज होता है. शो. To increase and decrease, press the keys respect. No बच्चे ये गलत है. ये decrease का, ये increase का है. Done. Next, write down the commands. Write the commands. Number 1, to add new layer, to open hue or saturation dialog box,
To open variation dialog box, to check spelling, to save selection, to open layer style dialog box. Open layer style dialog box. Do these 6 commands first. To add new layer, what is the command? Layer menu. Layer menu. Next is new, and then the sub option is layer option. To open hue or saturation dialog box, image menu, adjustments, hue or saturation option. So this is the sub option actually. Again, the command is same for the variation. Image menu, sub option is adjustment. The sub option is variation. Check spelling. To check spelling, हाँ जी, edit menu, check spelling option. To save selection, what is the command for save selection? No one? टेस्ट नहीं दिया आप लोगों ने, रिवाइज नहीं किया था तब? आई हैव सेंड द आंसर की ऑल्सो ऑफ अ वर्कशीट, वो पढ़ी है किसी ने खोल के? आंसर की देखी थी, आंसर की ऑफ वर्कशीट ऑफ चैप्टर्स, इतना पता है मैंने भेजी है, ये देखा था, खोल के नहीं देखी? सिलेक्ट मेन्यू, सेव सिलेक्शन ऑप्शन, select menu, save selection option. To open layer style dialog box, layer menu, layer style option, layer menu, layer style option. What is the shortcut key for inserting a layer? यो भी ऐड करो, शॉर्टकट की में ऐड करो. शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग द लेयर, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, इसको शॉर्टकट कीज में ऐड कर लो. फॉर एडिंग न्यू लेयर, for adding new layer the shortcut key is shift plus control plus n. To display layer panel, the next command is to display, इसको कर दूं रेस, हो गया ये सबका. 7th कमांड लिखो,
to display layer panel. To display layer panel. The command is window menu layers option. Windows menu layer option. Windows menu layers option. To copy selected part of the image, edit menu copy option. Be quick. To copy selected part of the image, write down this 8th command. To copy selected part of image, edit menu arrow copy option. Edit menu arrow copy option. To paste copied image, next command. To paste copied image, edit menu paste option. Edit menu paste option. Okay, rest of the commands we will do tomorrow. So do revise them once again, whatever the things you have written today in the notebook, okay? Give it a reading.